video I'm gonna show you guys something very exciting. So I've been getting a lot of comments and requests and DMs कि please share some affordable eyeshadow palettes. Now everyone love eyeshadow and अगर eyeshadow good quality के affordable हो तो बात ही क्या है. So in this video I'm gonna share with you guys that. तो मैंने कुछ eyeshadows order किए थे from Amazon and these are by the brand called Swiss Beauty. So these are the eyeshadows you guys. I have 3 eyeshadows to share with you and they are very affordable. So they are very affordable. 200 से 250 की रेंज में, इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है. So प्लस पॉइंट फॉर दैट. तो आज हम वही ट्राई आउट करेंगे. आई जस्ट बॉट दिस. मैंने अभी मुझे पैकेज रिसीव हुआ है तो मैं वीडियो बनाने के लिए बैठ गई. ऑफ कोर्स मैंने इसको हैंड वॉश किया है बट आईज के ऊपर और हाथ पे डिफरेंट आता है एज यू ऑल नो. तो हम साथ में देखेंगे कि आई शेडोज कैसी हैं. सो इफ यू वांट टू नो दैट देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. सो फर्स्ट ऑफ आई हैव दिस स्विस ब्यूटी अल्टाइम आई शेडो पैलेट. इसमें और भी बहुत सारे शेड्स थे तो मैंने ये वाला चूज़ किया बिकॉज दिस इज़ अ वेरी नाइस वार्म टोन काइंड ऑफ अ पैलेट एंड मुझे वार्म टोन पैलेट्स बहुत अच्छी लगती हैं. इस आई शेडो पैलेट में और भी बहुत सारे शेड्स थे, लाइक रोजी शेड्स थे, न्यूट्रल्स थे और वार्म टोन्स थे. तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हो. मुझे ये वार्म टोन स्मोकी आई शेडो पैलेट बहुत अच्छी लगी. एंड दिस इज़ हाउ दिस पैलेट लुक्स लाइक एंड दीज आर द शेड्स. एज यू कैन सी इसमें 9 शेड्स हैं. इसका परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जिसका एक्चुअल प्राइस है, जो अभी करंट प्राइस है, वो आपको स्क्रीन के ऊपर फ्लैश होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे. तो या नाउ द सेकंड पैलेट इज दिस वन. दिस इज द स्विस ब्यूटी आर्ट मूस आई शेडो पैलेट. सो मूस आई शेडो मीन्स इट्स गोना बी very creamy, buttery. So I am quite excited about this one. So these ones are more like colorful eyeshadows. This is the color layout. I think it's very gorgeous and very beautiful. And looking at it, I can actually see that it's more like a foil eyeshadow and it's gonna be super pigmented on my eyes. So I am quite excited to try this. The third eyeshadow which I ordered was this one, but I got this one. I don't know why. And it just says makeup here and it's by another brand which is called Hilary Rhoda. Now Hilary Rhoda की eyeshadows भी मैंने पहले try की हुई हैं and they are actually very nice. And this is how this palette looks like. I don't know why उन्होंने मुझे वो वाली नहीं भेजी, क्यों, मे बी आउट ऑफ स्टॉक होगी तो उन्होंने उसके बदले में मुझे ये वाली भेज दी. This is the color layout of this one. मैं इसका परचेज लिंक और इसकी जो प्राइस है वो अमेजोन पे सर्च करके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी इफ़ इन केस यू लाइक दिस वन, आपको ये वाली लेनी है तो. बट मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने ये वाली ऑर्डर नहीं की थी. मैंने तो दूसरी वाली की थी जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल और कलरफुल सी थी. आई डोंट नो व्हाई उन्होंने मुझे वो क्यों नहीं भेजी. मैं सारी आई शेडोज़ में से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी उसको लेके बिकॉज दैट वाज द ब्यूटीफुल कलर लेआउट और बहुत ही कलरफुल सी आई शेडो थी और बट वो उन्होंने मुझे भेजी ही नहीं. But it's okay. So now let's quickly swatch these eyeshadows because I'm very excited and then I'm gonna do my eye makeup with them. These are the swatches you guys. As you guys saw, this one is nice, this one is also very nice, but I'm not really a huge fan of this eyeshadow palette. So let's get started with the eye makeup. First of all, I'm gonna take this Ultime eyeshadow palette. So I'm gonna pick up this transition color right here and of course I'm gonna deposit this color on my crease. This is a beautiful peach tone transition color. I think this color is super pretty.
Okay, so pigmentation is nice, very pigmented I would say, and the blend is also very beautiful. It's not looking patchy at all. Okay, next step, I'm gonna take this color and I'm gonna deposit this color in my outer V. I'm gonna be very careful क्योंकि ये dark color है and I don't know about the pigmentation of this one. Okay, it's not that pigmented, but I would say कि इतना बुरा भी नहीं है. समटाइम्स क्या होता है कि कई बार कलर इतने पिगमेंटेड नहीं होते तो उसको बिल्डअप करते करते ही वो इतना मडी सा हो जाता है जो कि अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी. तो आपको थोड़ा सा उस चीज़ में ध्यान रखना पड़ेगा. ओके, सो कलर को मैंने डिपॉजिट कर लिया. आई एम गोना टेक द सेम ब्लेंडिंग ब्रश जिससे मैंने क्रीज कलर अप्लाई किया था एंड आई एम गोना ब्लेंड आउट द हार्श लाइन्स. आई थिंक इट लुक्स ब्यूटिफुल आफ्टर ब्लेंडिंग एंड कलर इतना पिगमेंटेड नहीं है बट डेफिनेटली पैची नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग. आई थिंक ब्लेंडेबिलिटी ऑफ दिस आई शेडो पैलेट इज़ वेरी नाइस. नाउ आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू ट्राई दिस वन. सो आई एम गोना पिक अप दिस कलर राइट here from this palette. This one I'm gonna take this beautiful foil gold color. It looks gorgeous in the palette and I'm very excited to try this on my eye. तो पहले मैं इसको अपनी फिंगर की हेल्प से अप्लाई करूँगी एंड देन ब्रश को लेके मैं उसको थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी क्योंकि फिंगर से एप्लीकेशन हो तो अच्छी जाती है बट इतनी नीट और क्लीन नहीं होती. एंड ब्रश की हेल्प से मैं इसको प्रिसाइज कर लूँगी थोड़ा सा. Now I'm gonna take this color right here और इसको मैं अपनी सेंटर ऑफ माई आईलिड के ऊपर अप्लाई करूँगी. So you can see that it has instantly jazzed up the look and it looks very gorgeous. This palette is very pigmented and very creamy. This time I'm gonna pick up this color right here and I'm gonna apply this color in my inner corners. So because I want to try maximum colors, I'm gonna create different eye look on my other eye. उसके लिए ये वाला कलर पिक करूँगी. This is a very gorgeous deep red, deep maroon kind of a color. तो मैं ये वाले कलर को पिकअप करके मैं अपनी इंटायर आईलिड के ऊपर अप्लाई करूँगी. एंड ऑफ कोर्स उसके लिए मैं अपनी फिंगर्स ही यूज़ करूँगी एंड आफ्टर दैट मैं ब्रश का यूज़ करूँगी. So this is how this color is looking like and it has deposited beautifully, very creamy and very pigmented as you can see. Like price के हिसाब से ये eyeshadow palette thumbs up है. I love this one. मैंने इसको deposit कर लिया. Now I'm gonna blend the harsh lines with this transition color, the same transition color जो कि मैंने previously use किया था ये वाले eye में. तो मैं इसकी line को blend कर लूँगी उससे. ब्लेंड करने से इसकी पिगमेंटेशन रेड की थोड़ी सी फेड हो गई है बट मैं बाद में इसको रिवाइव कर दूंगी. नाउ आई एम गोना टेक दिस कलर राइट हेयर एंड आई एम गोना पिक अप दिस कलर राइट हेयर और इसको मैं अपनी सेंटर ऑफ माई आईलिड के ऊपर अप्लाई करूंगी एंड माई इनर कॉर्नर्स पे और आईब्रो की आर्च के नीचे. So I think that both my eyes are looking very gorgeous and the color layout is very beautiful and very travel friendly as well. Very छोटी सी है तो you can easily slide it in your bag. So that's it for this video. If you guys want to buy these eyeshadows, the link is in the description box below and you can directly go to that link and buy this. This is not an affiliate link and this is not a sponsored video at all. I saw them online and I thought that maybe I should try them out in front of you guys and they turned out very beautiful. I am very happy about that. So that's it for this video. I hope that you guys liked this video. If you did, then don't forget to give it a big thumbs up. Make sure to follow me on my Instagram account and make sure to subscribe to my channel as well. And I will see you guys in my next video. Bye!